Hello everyone, we are here with the slot 5 review today, and I think once again we're hearing something similar in terms of the pattern. Hi Even, guys, hi. even you guys can let us know in the comment how was it for you, those who have done with the slot 5. Yes, so guys, जितना हम लोग को सुनने में आ रहा है from our students, एक So as far as I have heard, I so think, yes, sorry for that. yeah, please continue. इस बार अपने को 3 RCs दिखे in verbal, unlike the previous slot, मेरा वाला slot जिसमें हमने पास 4 RCs थे. We had two similar sets in LR and quants. दोनों एकदम सेम थे, बस थोड़ा सा नंबर्स अलग था. तो एक LR में डाला था, एक quants में डाला था. एंड वेरी मैनेजेबल इजी. एलआर थोड़ा सा लेंदी लोग बोल रहे हैं. एंड अगेन वो कैब हेवी था वर्बल में. 5 to 6 क्वेश्चंस जितना अभी सुनने में आ रहा है. मेरे वाले में और भी ज्यादा वो कैब था. इट वाज 10+. सो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग फॉर द ones who are a bit weak with the verbal section. Yeah. I think LR का the pattern has been same consistent since slot 1 to slot 5 also अभी सब लोग बोल रहे हैं कि लेंदी था but at the same time कोई ये नहीं बोल रहा कि बहुत टफ था या मीडियम लेवल था. Everyone felt it is like easy to moderate but lengthy. That means when anyone says that, the whole point of it is कि क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होगा तो आप जो क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो वो पिक करोगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस इजी है बेसिकली. सो द वन हु स्कैन्स द पेपर क्लियरली एंड पिक्स द इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट is the one who is going to score the maximum even though the paper is lengthy. So yeah, and I think compared to RCs भी similar number of RCs है, similar number of DIs है. तो we'll still wait for Aditya to join in. आदित्य सर ने ये स्लॉट में एग्जामिनेशन दिया है तो अभी आते ही होंगे एंड ही विल जॉइन अस एंड ही विल गिव अस द रिव्यू and then we will come to know exactly how it has been and if the pattern continued. But once again, सब स्टूडेंट्स का वही कहना है कि पेपर वाज इजी बट लेंदी. तो दैट हैज बीन अ कांस्टेंट सिंस मैं देख रहा हूँ. मैंने तो फर्स्ट स्लॉट दिया, विधान हैड गिवन फोर्थ स्लॉट यस्टरडे. सबका यही रिव्यू आया कि इट हैज बीन इजी बट लेंदी. सो दैट मीन्स वन थिंग इज फॉर श्योर कि देयर इज कंसिस्टेंसी इन हाउ द सीईटी एग्जाम और सीईटी सेल इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम. So this is a good news for 6 slot students, I think. Abstract is very Abstract is also very easy as per our students. Abstract and verbal both. So I'm assuming abstract में वही same series के questions होंगे which would be the easy ones. Nothing tricky. Input output के काफी questions थे इस बार LR में. And लोग बोल रहे it wasn't easy but moderate. Quants also moderate. So I guess it all boils down to how quick you are to solve those questions because easy तो है देखो. थोड़े से लेंदी है बट अगेन इफ देयर आर 10 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अ क्वेश्चन ऑफ एलआर तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम 10 स्टेप्स लिखते रहोगे अपने पेपर में. यू हैव टू बी क्विक मेंटली. यू हैव टू स्किप 2-3 स्टेप्स एंड सीधा तुमको फर्स्ट के बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ के बाद सेवन स्टेप, ऐसे कर करके यू विल हैव टू सेव आउट ऑन सम टाइम एंड दैट वुड गिव यू एन एज over others because you'd be able to solve more questions and get better marks. करेक्ट. एंड कमेंट में ये भी आया है कि इस साल के टर्बो मॉक्स 1 and 2 की तरह के लेवल का एग्जामिनेशन है विच इज इवन आई एग्री. हम लोग ने वो थोड़ा इजी रखा था जहाँ पे स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग 160s में भी. तो आई मीन दैट इज वेरी क्लोज टू आई थिंक दिस ईयर्स पेपर. सो हम लोग ने मॉक वैसे ही डिज़ाइन किया था टू मेक श्योर कि हम सारे डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज कवर कर सके with the aspect of some easy to lengthy type of questions as well. So
is there sixth Some are attempt? even saying that AR तो 25 on 25 जितना होना चाहिए. हाँ, आई थिंक या बिकॉज इवन लास्ट 4 स्लॉट्स में मैंने ये रिपीटेडली सुना है कि बहुत सारे एआर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आई मीन रिपीट इन द सेंस रिपीट फ्रॉम पीवाई क्यूज। तो जो काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस है, तो जिन्होंने भी मतलब पीवाई क्यूज में भी एक बार भी गो थ्रू किया है, या हमारे पोर्टल पे सारे पीवाई क्यूज फ्री में है, अगर आपने वो एक बार जस्ट दे दिया होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें रिपीटेटिव दिखते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। आई मीन when the paper is easy and lengthy, these are the small things that will work in your favor कि ऑलरेडी करके रखा है ये सारी चीजें, तो वो क्विकली याद आ जाएगा, बिकॉज स्पीड इज ऑफ द एसेंस इन दिस पेपर। एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने पिछले 4 स्लॉट्स में एक कंटिन्यूअस रिव्यू मैंने सुना था, दैट आई वांट टू शेयर, इज दैट एवरीवन felt it is easy but they were still struggling with the speed in this paper, and then they were asking कि exactly करना क्या है। I just wanted to say कि हम लोग एक mentorship session भी लेंगे, we'll discuss how to go improve your speed in these particular type of examinations in the coming weeks। हम लोग उस पर वीडियो भी बनाएंगे, तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, सब्सक्राइब करो चैनल को। and more reviews are coming in, so I'll just start some reviews, and Vidhan, if you also see any review, you can give yours। ओके, सो AR का सबसे पहले मुझे एक रिव्यू आया है कि इट वाज फुल ऑफ वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस। वंस अगेन अ गुड थिंग, बिकॉज दे आर इजी टू सॉल्व। देयर वर नो काउंटिंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। अच्छा, ओके, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट फिगर वाला क्वेश्चन था। एंड फ्यू जनरल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस विच आर योर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ऑड मैन आउट वगैरह। And apart from that, there were 3 RCs, two very easy, one was moderate। ओके, मॉडरेट वाले में टोन एंड ऑल पूछा था, बट जो इजी थे वो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं स्किम करके। ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, वोकैब में 5 to 6 वर्ड्स, अगेन वेरी सिमिलर टू ऑल द 4 स्लॉट्स। काउंटिंग फिगर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था विच वाज क्यूब काउंट करना है। अगेन सीरीज के क्वेश्चन है, वंस अगेन 2 DI सेट्स, वन वाज पाई चार्ट इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे, 2-3 अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे। Okay, the options were very close, is what I'm getting, which is what I had in my slot also. Vidhan, in your slot also, did you feel कि कॉन्ट्स में options बहुत close है, like decimal points में क्वेश्चन भले ही छोटा था still? Questions बहुत simple थे, but for example, if the answer is 21, I had options like 22, 23, 24. Okay, But again, it was so simple that ये सब से फर्क पड़ता ही नहीं. And I had seen one more question जिसमें बोला था which one is the smallest fraction. okay, तो उसमें से दो या तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे. सो वी जस्ट हैड टू चेक टू. दे वर okay, क्लोज बट अगेन इट कैन बी डन रियली फास्ट. तो ऐसा मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो लगा नहीं ऑप्शन से. okay। I mean, मतलब questions were simple at the same time, even if the options were close, option elimination से भी you could have figured out। And I think, yeah, even I agree, in my slot there were certain questions जहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से भी आपको आंसर आ सकता था, like that was how it is। And once again, repeatedly saying time and work, time speed distance, profit and loss, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं अभी तक इन सीईटी एग्जामिनेशन। तो कीप दैट इन माइंड कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं थे इस पेपर में। सो दोज हु हैड प्रिपेयर्ड डिलिजेंटली स्टार्टिंग से हर टॉपिक्स किया है, दे वुड हैव इजीली सेल थ्रू दिस एग्जाम। Still, we'll wait for Aditya, who will give us a very crisp and in-depth review, because
once again, he is attempting the paper. He might have come out, will join us in a moment. So please wait for Aditya. He will give you the most relevant review so far. And People once are saying again, एक question शायद wrong था in yeah, slot 5, which was of time, speed and distance. uh, टू ट्रेन्स वाला कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे विद वॉट एवर लेंथ एंड तुम लोग को स्पीड दे देते हैं। वो वाले क्वेश्चन का पीपल आर सेइंग कि इट माइट बी रॉन्ग। तो अगर इफ समवन हैड गिवन द पेपर एंड जो लाइव सेशन में है, सो दैट कुड बी रॉन्ग इफ यू फेल्ट सो। Aditya has joined. perfect. Hi Hello, hello. Aditya, how was your paper? We were waiting for your review. Again, very easy paper. Let's start with abstract. बहुत ही easy था, मतलब very straightforward. Mirror image and water. मतलब water mirror image and थोड़ा सा rotation वाले question. Very very easy. 15 minutes में anyone could score 20 plus. Then LR again easy to moderate. And similar to other slots. बहुत ही ऑब्वियस ट्रैप्स थे, 5 इनपुट आउटपुट के थे, बट आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, यू सी ऑल द स्टेप्स, यू फाइंड द लॉजिक, फिर नया जो आपको इनपुट दोगे उसमें दे टेल यू टू फाइंड स्टेप 3 और स्टेप 5, तो वो वर्थ इट ही नहीं है करने का। तो दोज ऑल हैड टू बी लेफ्ट, या एंड में करना था, बट 5 इनपुट आउटपुट, आई थिंक यू गाइस आल्सो फाउंड दोस अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल वे वाले क्वेश्चंस, उसके 5 थे। Puzzles, there were 2 puzzles this time, but one question each. Again, very obvious trap. 8 लोग थे, 4-5 कुछ तो 4-5 months में उनका कुछ तो उनको डालना था। इतने कंडीशंस थे, there were probably 9 conditions उसके बाद 8 लोग का। अगेन बहुत ही ऑब्वियस था, बिकॉज उस पे एक ही क्वेश्चन था। So anyone who would have tried solving would have lost out in the paper immediately there. Apart from that, very straightforward, 6 number series, 2 divisibility, critical reasoning था, वो assertion reasoning specifically 5 questions, data sufficiency but logical based, not quant based, 5 Venn diagrams, very very easy, PNC based logical questions 3, again easy, direction sense, analogy, blood relations, board mass पे questions, just की plus equals to minus, डिवीजन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद अगेन बॉड मास ही लगाना, वेरी इजी। कैलेंडर 1, डीआई का सेट था एक एलआर में दिस टाइम, वेरी 8 स्टैंडर्ड डीआई, चेंज फ्रॉम 1 year to 1 year एंड सिंपल 200, 220 to 330 हो गया, तो कितना चेंज आएगा, मतलब बहुत ही मेंटल करने का डीआई इन एलआर। सो अगेन वेरी इजी, वेरी पॉसिबल टू गेट 55 in 1 hour, I would say, because input output को आपको छोड़ना था, and जो भी ऐसे traps you had to leave it. Apart from that, verbal was, I would say, probably easy to moderate. Same pattern, 20 questions RC, 4 RCs, very easy to read. दो short story थे, which you would probably read in, again, school, 8th standard, 9th standard, के दो short story, एक एमएनए पे था और एक कुछ पेंगुइन्स पे था। इजी टू मॉडरेट, आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज ऑल्दो द आरसी वाज वेरी इजी टू रीड,
द क्वेश्चंस वर नॉट लाइक लास्ट लॉट में जो मैंने सुना कि जस्ट स्किमिंग से आ सकते थे. Some questions were on the tone of the passage. If this is what needs to be true, what if true क्या होगा based on the passage. So slightly moderate. Few of them were difficult, but I think 70-80% were easy. So again 35 uh, to 40 के बीच में आपको आराम से आ सकता है in 35 minutes. Uh, Quant was easy. DI, one pie chart, one table. Again, very, very easy. दोनों DI मिला के you could have solved in 3 minutes. And 10 on 10. बहुत ही mental math. I hope everyone solved it mentally. किसी ने पेन यूज नहीं किया होगा. बाकी as true for other slots, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए. तो अगेन अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया होगा, then you would have missed out on easy questions there. There were all topics: time, speed, distance, spans, series was there in LR and quant. मिला के quant में 4 थे, LR में 6 थे. But extremely easy series. मतलब series अगर आप चैप्टर पढ़ो तो first questions that come +1 -3 +5 वाले Fibonacci series का just addition of the next two numbers. Extremely easy series questions. Total 10. Quant में 4 थे. Percentages 4. PMC 3. Mensuration 3. Profit and loss 3. Clocks and calendars 2. HCF 1 question. Pipes 1 question. Time work 1 question. Again, board mass based 2 questions. Mixers allegation 1 question. Divisibility 1 question. Age पे 1 question. Again, तो एक एक दो दो क्वेश्चन सब टॉपिक्स है क्वांट में. Very easy, simple formula based. Again, 40 plus Lana in quant was very doable in 35 minutes. So 160, again, this paper का रहेगा. I think JB का cut off the topper would have scored probably around 100% अलग 170 तक आएगा इस पेपर में. Abstract, I think, don't know exactly बाकी सौ का कैसे था, but this was extremely easy abstract. Perfect, perfect. So I think the cutoff ranges for I think the three of us, we mentioned the same numbers, ±5 marks, I think. Zyada. So the pattern has been similar, and I think it all depended upon in LR particularly, as you also mentioned कि easy था but lengthy था. वो एक ही constantly सब students भी बोल रहे हैं कि easy है but lengthy है. And this was I think very close to our TTP Turbo 1 and Turbo 2 mocks. As far as we have designed, उसमें भी 160, 170 students could have scored, which was sort of the easiest mock that we had made. So yeah. Yeah, see, lengthy का again, unless guys, unless कोई slot प्रोफेसर का आके I would just say कि छोड़ना था आपको questions. There are 180 questions that you can solve in 150 minutes आराम से, easy और moderate वाले वो आपको ढूंढने हैं. 20 questions are tough. अगर आप उसमें से एक भी solve करोगे तो you will find LR या quant lengthy, but आपको वो छोड़ना ही है. प्लीज मेक श्योर. अगेन सेट में कितने क्वेश्चन है देखो. इनपुट आउटपुट वुड हैव बीन अ कंप्लीट वेस्ट इन दिस पेपर. पजल वुड हैव बीन अ कंप्लीट वेस्ट. ये आपको छोड़ना ही था. Correct. Think Vidhan, you wanted to add anything? नहीं आई वाज सेइंग दैट कट ऑफ सबके लिए इक्वल होएगा अनलेस कोई प्रोफेसर आके खराब नहीं कर दे उसको 180 190 लगे. So for anyone who is with some other coaching or whatever, please tell them कि उधर जाके स्कोर मत लाओ. या मैंने तो सब में डी मार्क किया है जस्ट एज अ एक्सपेरिमेंट. अगेन लेट्स सी उसमें कितना आता है. बट अगेन गाइस ये कोचिंग या प्रोफेसर्स का हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज अगेन टू एक्सप्लेन हाउ नॉर्मलाइजेशन एंड सीटी वर्क्स. इट इज नॉट अक्रॉस स्लॉट्स. तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 स्लॉट में मिला के टॉप 50 या टॉप 100 रैंक लाना है. आपको अपने स्लॉट में लाना है रैंक. तो Correct. अगर आपके स्लॉट में
एक फैकल्टी या दो फैकल्टी है तो आपका रैंक उससे दो हो जाएगा, एंड किसी और स्लॉट के रैंक 5 वाले पर्सन को मिल जाएगा आपका सीट when the merit list is made. So yeah, that's how faculty taking the exam affects it. But don't worry, we uh, will either get like 0 percentile, or 10 percentile, 20 percentile because we don't attempt anything seriously. Yeah. And coming to students are asking cutoffs for JBIMS, I think, Also, okay. Yeah. I think it will be around 155, 160 for 99.95 plus. And for 99 plus, I think 120, 125 के ऊपर भी आप score करते हो. तो I think 99 plus आता है for the students asking. And there is one comment that one professor has given some examination in some slot and he finished like 200 question in 137 minutes. So I mean, maybe they will not apply for the Capron, but yeah, that is going to maybe slightly affect the percentile of the students. That will definitely affect because again तुम्हारा एक percentile point नीचे होने वाला है उसकी वजह से, तो someone else with the same rank कौन है किसने in किया है? another slot will get the seat. And especially for all India students, if the faculty gets 100 percentile or a 99.99 percentile in that slot, तो आपको वो स्कोर आ ही नहीं सकता है, तो फिर आपका इमीडिएटली जेबी चला जाता है बिकॉज फॉर जेबी यू नीड 99.99. Anyway, again, guys, Hmm. take a break. आज announcement from our side is that our revision batch, crash course batch, जो हम लोग ये स्लॉट्स के हिसाब से हम ट्वीक करेंगे, हम इसी पेपर पैटर्न 6 स्लॉट्स का आई थिंक अभी सेम ही आने वाला है बिकॉज 5 स्लॉट्स का आ गया है. So we will prepare you for these slot के patterns for the second attempt, and the batch will be starting this weekend. And I think again, वो batch the people who are taking the second slots obviously sorry second attempt will obviously be थोड़े serious aspirants because they want as many tries they want uh, to get into their dream colleges, the top colleges. So I think वो 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं इन द सेकेंड अटेम्प्ट उसमें काफी सीरियस रहने वाले हैं, तो टेक 1-2 डेज ब्रेक बट प्रिपेयर करना चालू करो. अगर आपका पेपर ये अच्छा नहीं गया है तो जॉइंट टीटीपी विल हेल्प यू आउट ऑन हाउ टू एस दिस पेपर पैटर्न एंड दिस टाइप ऑफ सीटी पेपर. Yes, guys. I mean, same So take. guys, you can just head to our website and over you can have a look at the last lab course that we have right now. It's at a very affordable price because we wanted all the students to do really well in the second attempt. And also, talking about slot 6, I feel it's an advantage for slot 6 people because for all the slots, the pattern is similar, the chapters are similar. So, you all know what you have to study, especially in quants and LR. तो वो टॉपिक्स के बस बेसिक चीज़ें देख लो because you can score really well in the slot 6 because you know the pattern, you know what kind of uh, questions and chapters are coming. Again, lesser chance, but zero नहीं है that अलग ही नहीं है, आ सकता है अलग, but again, the probability of you getting a similar paper is higher. Yeah, even for the second attempt, as we are saying, second attempt maybe you can sort of get a similar. I think जब एक बार CET का re-examination भी हुआ था couple of years back, so it was like very similar to how the exam had happened earlier. So maybe those papers are already set and done. Maybe not, but yes, we can at least take learnings from over here. And काफी interesting learnings I think for all across the 5 slots. We gave 3 different slot coincidentally, सबको अलग अलग slot मिला. We got a lot of learnings as well. I think we'll incorporate that in the upcoming sessions. And yeah, if you're interested, please join us and stay tuned on our channel. Subscribe to our channel. We'll be posting more interesting content around CET, more useful content and data-driven content to help you in your prep.
Okay, I think that is it, guys. Then we'll leave. Chalo, okay. Thank Thank you guys for joining. Yes. कुछ thank भी you. होगा guys, you can always text us on Instagram, WhatsApp, whatever, and we get back to you as soon as possible. Yes. Thank you, guys. Thank you for joining.